what I can see is that if you can see my slides, so DPLD is famously known as ILD. So both are synonyms, but this is a new terminology, DPLD. So it's a heterogeneous group of disorders, and there are so many things that together come under this one heading. So what we are talking about to start with parenchyma. So parenchyma basically is a functional part of any organ. Like in liver, we have hepatocytes. In kidney, we have nephrons. So any functional cells that are working in organ is the parenchyma, and that parenchymal cells are mostly surrounded by the connective tissue and the supportive structures. So this whole thing, the functional cells and the supporting system, basically this is disease of that part of lung. So we understand that in the lung, we have airways and then we have parenchyma. So parenchyma is the part where the many other functions has been conducted over there, but the most important part is your exchange of air. So you can see that if we are talking about parenchyma, that refers to alveolar tissues, then bronchioles, respiratory bronchioles, alveolar duct and terminal bronchioles. ठीक है. देखिए ये बात समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एज आई हैव मेंशन बिफोर that this is basically a heterogeneous group of disease. So there are many headings that come under it. कुछ common है और कुछ common नहीं है. To understand which part of lung is important will give you an insight what basically diseases come under what you call it, this particular category of ILD or DPLD. So a very small introduction, physiology and anatomy I would like to discuss here. We understand that within the interstitium we have fibroblasts, mast cells, tissue macrophages and lymphocytes, and type 1 and type pneumocytes. Okay, so the important part here is that why I'm telling you that, because the disease process involve all of these issues, all of these cells. When there is inflammation, there is influx of many of these cells, and how they cause the destruction is actually kind of how the disease is in the humans. So, it's kind of an air channel that actually kind of communicate there. So this is the slide, and you can see I'm trying to give you the insight here what I'm talking about. So we can see there is a airway in between. This is your main airway that then divide into like million of a time, and at the end they have these bronchioles and these alveoli, and this is, if you can see, the histopathological way. So in between this is alveolus, then this is interstitial, and this is capillary bed. So your venous return, your arterial supply, your lymphatic drainage, your air communication. This is a part where all these things come together. So I believe this is a very good picture. You can see all of these things here. There are mucous glands, mucosal lining, and this is the perfect picture. If you can memorize this picture, you will be having definitely great ease to understand the disease. Okay, so there are two mechanisms how the interstitial disease kind of formulate. So there's a primary interstitial widening where, as I mentioned before, because of inflammation, there's influx of many cells and that cause edema and then fibrosis. Then there is accretion, the organization of that exudated material within that space, and that then led to the fibrous part into the permanent change into the interstitial. So if you can see, this is again another view of your that what we have discussed before. This is alveolar space, and you can see the capillary lumen inside it. तो जो ये वाला part है जहाँ पे मैं आपको show कर रही हूँ अपने arrow की मदद से, this whole part will get destructed. You understand कि आपका जो air का और जो आपका blood का जो communication हो रहा है through this part, it would not be happening. आपके pneumocytes से जो new cells बन रहे हैं जो kind of repair करता है इस पूरी चीज़ को, वो भी नहीं हो पाएगा अगर ये पूरी जगह फाइब्रोस्ड हो जाएगी किसी भी inflammatory cells की वजह से. I'm not going into histopathology because definitely that's not part of today's discussion. लेकिन सिर्फ एक हल्का सा मैं चाह रही थी आप लोगों को नजर आए कि जिस तरह ये नॉन इंटरस्टिशन है जहाँ पे आपका ऑक्सीजन एंटर हो रही है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वापस जा रही है एक्सचेंज होने के लिए लंग में. लेकिन अगर ये स्कार हो जाएगा आपका इंटरस्टिशन तो आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा और आपका जो PCO2 का रिटर्न है
not in the initial part, but definitely later in the part, it can also get disturbed. Okay, so my basic purpose of today's क्लास वाज क्लिनिकल अप्रोच टू टीपीएलडी। तो ये तो हमने बेसिक फिजियोलॉजी थोड़ा सा एनाटॉमी एंड हिस्टोपैथोलॉजी किया है, लेकिन इन इन योर लेवल एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड की क्लासिफिकेशन क्या है उसके, एंड हाउ टू अप्रोच या हाउ टू सी अ पेशेंट ऑफ डीपीएलडी। ठीक है, अब देखें आपके पास, अब देखें तो चार ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बुक्स में लिखी हुई होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूर पता होना चाहिए, वो आई फीस है, दैट इज इडियोपैथिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, अच्छा इडियोपैथिक वो है जो कि हम लोग इसमें सारे वो नमूनाज हैं जो कि आपको फेमसली आप जानते हैं, जैसे IPF इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मोस्ट जब आप राउंड के दौरान होंगे पल्मोलॉजिस्ट के साथ तो IPF ही कह रहे हैं, NSIP दैट इज नॉट स्पेसिफिक इंटेस्टाइनल निमोनिया, कॉप कहते हैं हम इसे, क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया। इसके रेस्पिरेटरी ब्लॉक है RBILD, DIP is discriminated, AIP is acute. So these are the famous few नेम ऑफ डिजीज जो कि इस हेडिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, IPF मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं और मेरा थोड़ा फोकस इसमें होगा क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर डिजीज जहाँ पे एडवांसमेंट बहुत आ रही है, जिसमें न्यू ड्रग्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं और बहुत वर्कअप हो रहा है इसमें रिसर्च की उसमें। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है ग्रैनुलोमेटोसाइलेंट, साइकोइडोसिस एंड HP दैट इज हाइपरसेंटिनोमाइटिस, हम इसे EAA भी कहते हैं, एक्सटेंसिव एलर्जी एल्वेनाइटिस, ये ग्रैनुलोमेटस में आ जाता है। इसे हम इडियोपैथिक में क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें अंदाजा है कि जो इन्फ्लेमेटरी पाथवे है वो कौन सा वाला आ रहा है, कौन सा कैस्केड को फॉलो कर रहा है और कौन सा आपके मेन स्टार्टिंग पॉइंट है जिसकी वजह से डिजीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, फिर ILD of known association, that means the diseases with them the ILD has been associated like connective tissue disease, ऐसे ही है आपका, हम आगे डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स इसे और डिटेल में, लेकिन जो कॉमनली जो डिजीज़ है RA है उसमें आपको पेशेंट्स देयर आर टू वेज द पेशेंट कैन प्रेजेंट। पहला तरीका ये होता है कि आपका जो पेशेंट है वो इनिशियली लंग प्रॉब्लम के साथ आता है, व्हेन यू सी द पेशेंट एंड इवैल्यूएट द पेशेंट, वी फाइनली कम टू अ कंक्लूजन दैट द पेशेंट हैज ILD सेकेंडरी टू कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। और जो दूसरी तरह आता है मीन्स वो ये है कि नो केस ऑफ RA है, फॉर एग्जांपल 45 year old lady and she is on being RA medication for last 10-15 years and now she start having symptoms that indicates that the patient start developing the lung disease. So the both ways the patient can come. तो जब हमारे पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट ILD का है, तो हम उसमें हमेशा हर तरह का वर्कअप करवाते हैं ताकि हम उसे इनमें से किसी एक कैटेगरी में डाल सकें। क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है, इसका प्रोग्नोसिस इम्पोर्टेंट है। पेशेंट ऑफ IPF कम टू मी एंड 65 year old, तो मुझसे पूछेगा कि डॉक्टर साहब क्या ये बीमारी रिवर्स हो सकती है, will I be perfectly fine? So I need a complete knowledge of that disease and its prognosis to tell the patient, okay, this is how most of the time disease progress and these are the medications that can alter your disease progress। ठीक है, अगर IPF का पेशेंट है तो उसकी मैनेजमेंट एटलीस्ट इनिशियल पार्ट में डिफरेंट होगी फ्रॉम द ILD ऑफ कनेक्टिव डिजीज। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको एग्जाम्पल दी 45 year old lady हमारे पास आती है, नोन आ रहे हैं 10 years से और कनेक्टिव टिश्यू में, नाउ शी स्टार्ट हैविंग द ILD सिम्टम्स। अब मुझे डिसाइड करना है एज अ फिजिशियन कि क्या वो ILD रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है या फिर ड्रग इंड्यूस है, क्योंकि बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो आपकी RA में यूज होती है और डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में यूज होती है एंड दे इवेंचुअली एंड अप causing the ILD या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। अब जिस तरह ड्रग का ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है, if I continue giving them medication for ILD but I am not removing the participating the main factor like drugs or the occupation, the patient would not be better, isn't it? क्योंकि आपने जो मेन रीजन है उसे नहीं हटाया है। एक पेशेंट एस्बेस्टोस फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी पुराने सीमेंट बिल्डिंग में वो एक प्लम्बर है जो कि उसको डिमोलिश कर रहा है
और वो कंटिन्यू रखता है मतलब despite of every effort, the patient would not get improved because the asbestos exposure is definitely very high in this patient. Okay, this is another way to classify idiopathic inflammation. देखिए, लास्ट स्लाइड में मैंने आपको कैटेगराइज किया है कि जो नोन है और जो अननोन है, ठीक है। तो इसके में आप देख रहे हैं दो डिफरेंट और हैं जिसमें ग्रैनुलोसिस और मिससेलेनियस है। यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं IIP से कर रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी एक दफ़ा आप लोग इस स्लाइड को पढ़ लें क्योंकि देखिए पूरी पूरे नाम हम लोग को भी आदत होती है कि वी यूज द mnemonics for the disease. So kindly have a look of this slide and then we'll go further. Any questions till now? Okay, students, I understand chatting is very difficult, but at least you guys can write a message on the chat box that you understand something or you're not. So I at least मुझे पता चलता रहेगा you all are awake and listening to me. Okay, Maha, at least somebody respond. So this is the classification of our IIP, that idiopathic intestinal pneumonias. So we categorize them according to their evaluation, like acute, subacute, or chronic. Hello, hello. Just a minute, class. Just a minute. Give me a minute. Uh, I'm sorry for the interruption. So we are dividing into acute, subacute, and chronic. So AIP is mostly it resemble ARDS in its behavior. So the patient who are coming with AIP mostly end up having they behave like ARDS and they mostly end up being treated as ARDS. ठीक है. NSIP जो आपका है और lymphocytic pneumonia और cough that are mostly subacute. और जो UIP है it's usual interstitial pneumonitis, that's an other name for IPF. It's the histopathological name for that disease and commonly ये दोनों interchangeable हैं. Somebody use UIP and some use. Hello, बच्चे कहते हैं काले साहब बता रहे हैं लेक्चर में. Hello. So, this is an incidence trace but this is a quite old data of incident ILD, so I would like to kind of skip this one. Okay, so this is a very important slide where I want to show you. And it shows how to approach patient. And how to do what are the steps in the evaluation. So history definitely is the most important part, and with the history just पहले mentioned critical, it's just not about to identify ILD. It is very important to see what kind of ILD the patient has. In the physical exam to confirm it, then the radiological, PFT, serological studies, and histopathological studies. इनमें से अगर कोई भी आप हिस्सा मिस करते हो तो आप जो है सही डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाते हैं. जहाँ तक हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट की बात है, दीज आर रियरली डन. द रीजन बिहाइंड कि जो पेशेंट हमारे पास आईएलडी के साथ आते हैं उनकी लंग बायोप्सी इतनी आसान नहीं है. पाकिस्तान में इस वक्त तक हमारे पास जो अवेलेबल मेथड्स हैं हिस्टोपैथोलॉजी के, वो या तो ओपन लंग सर्जरी है या वैट्स है.
दोनों ही तरीके जो है वो ये हैं जिसमें जो पेशेंट है उसे एक बड़ी सर्जरी करना पड़ेगा, और उसमें आपको पेशेंट को स्ट्रेस में जाना पड़ेगा, और ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा होगा कि उसका जो प्रोस है, जो बेनिफिट्स हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना हम पेशेंट को हार्म पहुंचा सकते हैं। बिकॉज आप अंडरस्टैंड करते हो कि जो लंग प्रॉब्लम होते हैं, पेशेंट सीओपीडी होते हैं या जीपीएलडी होते हैं, उनका जो बहुत बड़ा मेजर मसला है वो ये है कि जीए को उनको टॉलरेट करना इज नॉट दैट ईजी। तो अगर वो जीए को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो खुदा ना खास्ता आप समझ रहे हैं, द पेशेंट would be ending could be end up on the ventilator and ICU and the prolonged stay and khudana khasta um, complication associated with the um, ventilator. History is very 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 important. History important इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपकी हिस्ट्री ही आइडेंटिफाई करेगी व्हाट काइंड ऑफ आईएलडी दिस इज। और इसमें बहुत बड़ा एक बहुत लंबी हिस्ट्री है जो कि मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन हमेशा वी काइंड ऑफ यूज द फॉर्मेट कि ओके वेयर द पेशेंट इज गोइंग। For example, the patient's female and she's middle age, I would love to see the patient connective tissue profile when the patient is coming IUD. But if the patient is male, शायद मैं connective बेशक हो सकता है मेरे से, but I would not be going detail with that. And I would like to ask the occupational history first. The home layout कि किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग में तो नहीं रहते हैं या इस एरिया से वो लोग आ रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आप देखिए मैंने हॉबीज और पेट लिखे हैं। Why this is important, any student can answer. Which kind of ILD is associated with the pets or the hobbies? Please, I want you guys to answer it. So even if you don't know, I would like to see some messages here. Otherwise, I'll definitely take names and ask students to reply that. I'm asking you that I have written here hobbies and pets. What do you think? Which ILD is associated with hobbies or the pets? So, Zoha Shahid, what do you believe? Simra Khan, Gayatri Devi, Rohit Kumar. I want answers to be written by you guys on the screen kindly. Good. ठीक है, आप एस्पेजिलोसिस कह रहे हो, लेकिन एस्पेजिलोसिस जो है बेटा, दैट इज अ फंगल इन्फेक्शन, इट इज नॉट द ILD। बट ओके, दैट्स गुड गेस, आप एस्पेजिलोसिस की बात कर रहे हो, बट इट इज kind of infection. Aspergillus fungus can cause 3 or 4 kind of infections, and one of them are these. I have taken name of few students, and Yusra, I would like you to take this attendance. If they are not replying to the chat box, then I would like to mark them absent. Okay, ma'am. Okay, thank you. सो बेटा जो हॉबीज है और जो पेट्स हैं, जो सबसे कॉमनली एसोसिएटेड है वो HP है, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। उसके अंदर ही एस्परजिलस भी एक फैक्टर है, तभी आई एम अप्रिशिएटिंग देवा कि उन्होंने सही रिप्लाई किया है। आपका जो HP है जिसे EA कहते हैं, एक्सटेंसिव एलर्जिक एल्वेलाइटिस और एक्सटेंसिव एलर्जी है, तो वो भी जो है वो इसके साथ इन्वॉल्व है। ठीक है, आपका जो होम लेआउट है वो तो बता चुके, एस्बेस्टोस के साथ भी हो सकता है। फिर आपका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मुझे बताइए कौन कौन से ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो कि आपके इन्वॉल्व हैं ILDs के साथ। नेम 5 or 6 ऑक्यूपेशंस जो यू आर नो अदर देन एस्बेस्टोस, जो कि मैं 2-3 दफा मेंशन कर चुकी हूँ, आपको पता है जो कि ILDs के साथ है। So I am picking random students because I could not get any answers. Fatma Shakil, Nimra, Ikta Kumari.
Good, very good. Cotton worker, coal workers and जो कॉटन वर्कर्स है ना उसमें देखिए दो तीन और चीजें भी हो सकती हैं। जो कॉटन के साथ आते हैं वो एजमेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कॉटन में जो फाइबर का यूज होता है वो पेशेंट्स को कभी कभी आपके वो कर सकते हैं। गुड माइनर्स जो है हर तरह के, चाहे वो सिलिकॉन के साथ है चाहे वो कोल के साथ है, वो आपको दे सकते हैं ILD। गुड। सो इसके अलावा आपकी शिप ब्रेकिंग जो है वो आप बता सकते हो कि उसमें भी आपका है। प्लम्बरिंग जो है, ग्लास वर्क है। वेरी नाइस जोहा, बर्ड कीपर आपने लिख कर दिया है, वेरी नाइस। वो भी डेफिनेटली इसकी जो HP है उसकी बहुत कॉमनली हमारे पास होता है। गुड। ओके, फार्मर्स, वेरी नाइस, फार्मर्स भी होते हैं इसमें। अच्छा चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आपका स्टील माइनर्स, गुड, एस्बेस्टोस, ओके, सिंथेसिस, ठीक है चलिए, थैंक यू सो मच। Now we are going for temporal progression. जितने भी acute ILDs हैं, as I have mentioned before, they are oftenly kind of treated as ERDs. उस वक्त differentiate करना बहुत important होता है। जैसे eosinophilic pneumonias जो हैं, when they come like for acute cases, we need to understand कि आपकी insect infestation तो नहीं है, या कोई ऐसा सुपर एलर्जिक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, सुपर एलर्जिक तो नहीं हुआ है, तो उसमें एंटीबायोटिक से ज़्यादा रोल स्टीरॉइड्स का होता है। हम चाहे एंटीबायोटिक कवर कर रहे होते हैं to cover the superimposed infections, but the steroids have good role in that. ड्रग्स, आपको ड्रग्स रोकना जरूरी है वरना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार ये कहूँगी कि आपकी हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक UTIs के लिए, और ये बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में कि डायबिटिक पेशेंट है, फीमेल और मेल, एंड देयर हैव recurrent UTIs and now she has shortness of breath and crackles and auscultation. So basically they wanted to ask कि UTI recurrent है और most likely nitrofurantoin दी गई उन्हें in the past and they cause the ILD. So this temporal progression of disease from one disease to drug to another disease is very important to understand. कि हमें पता हो कि क्या है, so that we can treat the exact cause and reduce the chances of progression of fibrosis. So these are chronic we already have discussed. And if you can see on the slide, this is a very busy slide and you can see like hundreds of drugs on it. ये बहुत सारी drugs हैं, but I kind of do a bit of highlighting so you understand that these are the major um, uh, classes of drugs like antibiotics. There are many of the antibiotics, but most commonly is nitrofurantoin. आपके लेवल पे कम से कम आपको nitrofurantoin का पता होना चाहिए, अगर बाकी नहीं पता। Anti-arrhythmic immunogens, obviously जो भी बच्चे आगे पोस्ट ग्रेजुएट इंशाल्लाह एग्जाम देंगे, दिस इज वेरी कॉमन सिनेरियो that a guy, a male, most of the time they say male, but that could be female, who had atrial fibrillation and now they have stain tanning of the skin or black tanning of the skin and have shortness of breath and bilateral auscultation pain on the characters. So what is that? So that is amiodarone induced ILD. So ये इस तरह के सिनेरियोज है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की आ रहे तो एंटी इन्फ्लेमेटरीज में गोल्ड इस्तेमाल होता था, पेंसिलिन इस्तेमाल होती थी, अब डेफिनेटली ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। एंटी कन्वल्सेंट्स है, आप देखें नारकोटिक्स, कोकेन, रेडिएशन, स्पेशली जो फीमेल पेशेंट्स ब्रेस्ट कैंसर के साथ होती हैं, दे कम बैक टू अस बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपिक एजेंट्स एंड द रेडिएशन दे हैव। EML पेशेंट्स जो होते हैं, एक्यूट माइलर ल्यूकेमिया, तो ये कुछ डिजीजेज हैं जो आप लोगों को ज़रूर पता हो कि अच्छा ये वो बीमारियाँ हैं जिनकी ड्रग्स हमें ILD की तरफ ले जा सकती हैं, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए बिफोर गोइंग फर्दर। Then the physical examination. The physical examination, the most common is bilateral velcro-like inspiratory characters. These are the crackles that is like at the end of the inspiratory phase. They are like different from the bronchiectasis wale crepitations. It is more coarse to bronchiectasis के होते हैं. They are not symmetrical in bronchiectasis, but most of the time in ILD they are symmetrical. दोनों तरफ होंगे, ज़्यादातर बेसिस पे होंगे। ठीक है, ये टिपिकल IPF का और कनेक्टिव टिश्यू का है। इसके अलावा भी आपके ऊपर ही मिल सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि देयर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ लंग दैट कैन बी इन्वॉल्व इन डिफरेंट पार्ट ऑफ DPLD। लाइक आपकी जो साइड आगे शो यू के जो लोअर पार्ट ऑफ लंग है मोस्टली IPF में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज है, लेकिन जो HP है, हाइपोसेंसिटिव निमोनाइटिस या TB का जो पोस्ट फाइब्रोसिस होता है, वो आपके अपर पार्ट्स ऑफ जो लंग है वो निमोकोनियोसिस है उसे इन्वॉल्व करता है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप रेडियोलॉजी देखेंगे तो रेडियोलॉजी में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ILD है तो ILD कौन सा वाला है। ठीक है,
अच्छा, फिजिकल एग्जामिनेशन में चेस्ट के अलावा जो रिमेनिंग फीचर्स हैं उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन और कॉल पल्मोनरी है। आई होप ये पहले भी आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे, इसके फिजिकल साइन आपको देखने होंगे। ठीक है। आपके पास क्लबिंग के साथ अगर बायलैटरल क्रैकल्स हैं तो दोनों हो सकता है, ब्रोंकिटिस भी और IPFP। बट क्लबिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ पल्मोनरी। एंड इसके दो तरीके होते हैं, एक जो जिस तरह अपना हाथ दिखा रही है, you need to ask the patient to join the fingers and see the gap if it's present or not, or you can ask the patient to straightly see, or you can ask the patient to hold the finger like that, and then you can actually keep your paper or a card on it to see if there is a distance or not. So this is how we do the physical examination of the clubbing. ठीक है। और ये इसके ग्रेड्स होते हैं 1 2 3 4, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्लासेस में। Again, the slide is very important. You can see this is not a slide of lung, but these are the relevant features of the patient. If the patient is coming with the arthritis, then connective tissue disease के साथ उसका handling है. You can see vasculitis as patient को, तो I would also like to evaluate the both things together. And you can see this is the rash present on the cheeks and on the eyes. So dermatomyositis, polymyositis, sarcoidosis, it's really sorry. Um, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, नॉट सर्कोइडोसिस। ये सब जो आपकी जो बीमारियां हैं इसमें आपके जो रेलेवेंट फीचर्स हैं देखें। लॉन्ग टर्म आपको जब एक पेशेंट आइंडो के साथ आएगा, आपको स्किन चेंजेस भी उसकी देखनी है, जो बहुत सारी जो डिफरेंट बीमारियों में अपनी अपनी जो स्किन चेंजेस हैं आपको सीधा आई चेंजेस आपने ज़रूर देखनी है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज आपके स्क्लेरोसिस वगैरह वो करती हैं। फिर आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली देखनी है जो कि सर्कोइडोसिस में हो सकती है आपकी। और फिर जो आपका हार्ट और फिर मसल्स। सो बेसिकली स्किन, आपका जो कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको रूल आउट करने के लिए स्किन, मसल्स, जॉइंट्स, हार्ट, लिवर एंड आइज, दीज आर द 6 मेजर पार्ट्स लंग्स के अलावा आपने एग्जामिन करने हैं। So, X-ray. Now we are coming toward the radiology, and we will go toward hematology, how to approach a patient. So you can see that the X-rays are very good. They have sensor 80%. But I would like to say if a normal X-ray is there and you are finding symptoms and you are finding the clinical examinations things, so you would not say that it's not, because a normal X-ray does not rule the presence of GPNT. You need to evaluate it further. X-ray is not a gold standard test. You need to get further tests to evaluate. HRCT now give you a very good evaluation of the lung parenchyma, and usually in clinical practice we do that. So जैसे मैंने आपसे कहा था कि different patterns हैं ILD के. I hope I'm not going very fast. It's a long topic and I really would like to cover it. If you guys feel that I'm going very fast, kindly let me know so that I can repeat the things. And I can, I can repeat it like 2 or 3 times, whatever you want. सो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में जो आपका लंग एक्सरे है उसमें लीनियर चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और नॉडुलर भी हो सकते हैं, और हनीकॉम्ब। तो दीज आर few terminologies we use more commonly in our clinical practice. We say the patient has reticular changes, you can see the reticles here, you can see the nodular changes, and when this is both combined, this is reticular nodular. And this is honeycomb. On the X-ray, we don't find these details. Sometimes we can see the reticular nodular shadows, but for the honeycombing, the detailed examination, we need mostly HRCT. So there are few X-rays I would like to discuss with you here. Like on this pattern, you can see on the above X-ray, there are reticular shadows all over the field on the right side. On the lower X-ray, you can see the nodular pattern. If you can see my arrow, you can see there are multiple nodules, and the bilateral, but more of the right side. There are higher prominence over here. Sometimes, rarely, but that can happen. The patient can come with air bronchoplasms. If I show this X-ray to you in the exam, the first response I would like to ask from the student would be pneumonias, and then leading to bilateral pneumonia in areas. But on the lower down the list in differential diagnosis, you also need to see there are few ILDs that can actually present like consolidation and like COP, cryptogenic organizing pneumonia, जो हम जिक्र कर चुके हैं. This is one ILD that mostly present like consolidation in the patients. ठीक है. और AIP जो हमने डिस्कस किया था कि ARDs represent करता है, that is also under the list of DDs in this X-ray. But definitely would like you to start from pneumonias and ARDS and then coming down to this differential, and which kind of ILD you also need to know that.
So if you can see this X-ray, you can see curly B's and curly A lines. इसे छोड़ दीजिए, this is a bit higher. On this side of X-ray, you can see on the right side there is a volume loss you can appreciate. देखिए मैं X-ray के बहुत डिटेल में से नहीं जा रही, मैं assume कर रही हूँ कि X-ray से क्लास आपकी हो चुकी है. And you guys know what when we call normal volume and reduced volume. So diaphragm की किस लिमिट तक आना चाहिए, diaphragm lips की किस लिमिट तक आना चाहिए, I'm assuming you know that. So this is a reduced volume of the lung, especially on the left side. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम रिड्यूस आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा. तो ILD में जो एक्सरे की फाइंडिंग है स्पेशली IPF में, वहाँ पे रेटिकल नोडुलर शेडोज के साथ आपका रिड्यूस लंग वॉल्यूम बहुत अच्छे से नजर आ रहा होता है. Okay, we can skip this thing. Okay, so what is the dominant pattern of HRCT? You can see we have discussed this. We are not going into very detail because ये एक important slide है. I would like you to see which zones are important. देखिए शायद ये बात मैं अपनी presentation में 6 to 7 टाइम कह रही हूँ, but this is very important. That's why I'm repeating again and again and again. That what kind of ILD we are treating is an important part of our overall management. My approach, my history, my examination, my choice of test depends on this thought process. If I would not put my patient's ILD in one particular box, I would not be able to manage that patient effectively. So this is very important. So when I'm seeing HRCT and I see that upper zones are involved more than the lower zones, then I'll say, okay, this is HP or sarcoidosis. But if I believe that lower zones are more involved, that is IPF and asbestosis, rather, but the possibility of these two are much higher than the HP. ठीक है. अब उसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि lymphadenopathy है किसी पेशेंट को, और upper zone involvement है. I would say sarcoidosis is the more important part in that. अगर lymphadenopathy नहीं है और pleural involvement है तो asbestos ज़्यादा है. तो डिफरेंट तरह की ILDs में डिफरेंट तरह के पैटर्न्स हैं. At least in your class, at least you understand that upper or lower में क्या difference है. Okay, any student volunteer and write this X-ray for us. Sorry, because again, HRCT, I understand you would not be able to read at this moment, but X-rays because you're reading here from your class, I'm definitely hoping that you guys know how to read an X-ray. So kindly. So Ariba Abdullah, I would like you to answer this thing. Jeevan Deep, Mir Muhammad, and Saqib Hussain, or anyone else who would like to do that. Heterogeneous opacity, अभी हमने बात की रेटिकुलर की, हमने बात की नोड्यूलर की, so हमने बात की वॉल्यूम लॉस की. So I would like, ठीक है, you are saying it's right, that's bilateral, it's lower zones, good, दो चीजें आपने अच्छी हैं. You are right, this is heterogeneous opacity, but what kind of opacity? If you can see the volume is lost over here. The trachea is full on the right side more, and there is a volume loss, and not in volume loss, there's reticular shadows all over here, bilaterally more on the right side. This is a CT scan and I really want you to see the CT scan. I have brought two ones. अभी देखिए ये वाला जो CT scan है और आप इसका peripheral देखें क्या है. इनकी जो peripheral site है वो comparatively इसका normal है. And you can see that there is like a cystic kind of things over here. If you have seen honeycomb in real or in picture, then you definitely would have seen the pattern is quite similar with that. And you can see on the peripheral basis. लेकिन अब जो CT scan है ना, ये anterior part है हमारा, ये हमारा posterior part है, क्योंकि vertebral नजर आ रहा है. तो ये basis है हमारे lung की और ये lower part है क्योंकि हमें heart नजर आ रहा है. ठीक है. एटलीस्ट इतना आपको पता होना चाहिए कि हम CT scan में क्या देख रहे हैं. ये हमारे lungs है जो black है और इसमें जो सिल्स नजर आ रही है, देखिए ये पेरिफेरी है. दिस इज ऑल पेरिफेरल क्योंकि ये सेंट्रल है जो ट्रेकिया के आसपास है उसके साथ है. किसी भी स्टूडेंट ने अब तक रिप्लाई नहीं दिया इसका. आई गेस कि I'm not sure why there is no reply from the questions I'm asking from the students.
Hello. Sir, can you hear me? Hello. Yes, ma'am. Okay. So I would like students to answer the questions I'm asking, but I guess the students are not. I'm not sure if they are. Answering any one of them. मैम दो रिप्लाईज हैं चैट में, एक अरीबा अब्दुल्ला का है और एक सना नजीब अशरफ का है. But I'm taking the name of the student. They are not replying. Hello. यस Can you hear मैम. me now? स्टूडेंट्स आप अपना माइक अनम्यूट करके मैम को आंसर करें. So can you hear me clearly? Because the students are saying that they can't hear me clearly. So if you want, I can speak more loudly than that. मैम थोड़ा सा आप लाउड बोल लीजिए, मुझे तो क्लियर आवाज आ रही है. Okay. चलें, ठीक है. Okay, this is a patient. These scenarios are very important because these can come in your exam. So there's a 65-year-old gentleman, difficulty in swallowing, tightening of the skin and shortness of breath. So we are giving you 3 clues here, multiple episodes of choking during meals. So we are giving you 3 clues here that the patient has tightening of skin, he has difficulty in swallowing and multiple choking episodes. So in this scenario, we understand that the systemic sclerosis is one of the diagnoses. And then the CT scan and the X-ray is showing that there is the shadowing in the lower part. So most likely the systemic sclerosis and then with that ILD. So the patient has low-grade fever and chronic cough. The two hints are toward the history that the patient might have some infectious kind of disease. And you can see there's more nodule part over here. So that's what I would like to tell you, that different kind of diseases have different um, presentations. So I'm skipping the CT part because I just brought it so that we can communicate on it, but it looked like to be a bit difficult. अगर हम आ जाते हैं रेडियोलॉजी के बाद PFTs पे. PFT is a very important part of ILD, and the restrictive pattern of ILD is mostly on the PFTs. Your FVC and your total lung capacity all reduced with the time of progression. और जब हम मरीज को मैनेज भी कर रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि with the treatment after 6 months or after 3 months is there any improvement in these capacities or is there any decline, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट डिसीजन इस पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. फिर ये लंग वॉल्यूम्स हैं. आई होप यू ऑलरेडी क्लास हैव बीन डन, बट दीज आर ऑल द वॉल्यूम्स वी यूजुअली सी अदर देन द RV. We cannot see the RV, especially on the simpler PFTs. Okay, so this is biopsy, which we have discussed previously, that the biopsies is very important, but we do not have much options in Pakistan to do the biopsy. We only have VADs, and that's a big procedure. But around the world, the transbronchial biopsy is usually being done to see what kind of ILD is there, so that they can actually not only see कितना परसेंट मतलब आपकी कितनी वो है prevalence कितनी है different ILDs की, but also to manage the patient accordingly. तो हमने बात की थी UIP की थोड़ी देर पहले. तो UIP is the other name of IPF, and you can see this is the histopathological way, जिसमें usual interstitial laminitis जिसे हम कहते हैं. This is lung, honeycomb lung. After the patient died, that's the specimen they have kept. So this is an approach to ILD I would like to share with you. आपको suspected ILD है, एक बहुत proper history is very important. Then the radiology, then PFTs and laboratory. आपका HRCT से अगर आपकी सिस्टम IPF हो चुका है तो हम ये पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि HRCT ने अब जो आपकी बायोप्सी को है काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है. बायोप्सी टिल नाउ इज गोल्ड स्टैंडर्ड, बट HRCT में एक टिपिकल जो UIP पैटर्न है वो अब मतलब अब हम कैटेगोरिकली इसे यूज़ करते हैं. वी डू नॉट नीड बायोप्सी फॉर दैट. लेकिन अगर आपका HRCT वो आपको नहीं बताता UIP पैटर्न और कहता है किसी और तरह का ILD है, तो हम आपको उसके बाद दोबारा हमें देखना है कि क्या क्या हो सकता है और हमें किस तरह आगे बढ़ना है. आपने सारे रिवर्सिबल कॉसेस पहले रूल आउट करने हैं.
अगर वो सब रिवर्सिबल कॉजेज रूल आउट हो चुके हैं और आप एंड में आईआईपी पे आप गए हो इंटरस्टिशियल अमोनियाज पे, तो ये आपके रेस्ट ऑफ आईआईपीज हैं जो कि आपने देखनी है. There are many conditions that mimic the DPLD, especially infections, viral infections, PCJ or TB, and we need to evaluate this before making a diagnosis of ILD. So diagnosis is very important, is the first thing. Then we see what is the level of impairment the patient has. We will remove the antigens. We have discussed in detail that we can provide the patient protection at their workplace. ठीक है. और इसमें आपकी जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें लाइफ प्रोलॉन्गेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज रोकना है, इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, और जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज हैं उन सबको एड्रेस करना है. जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, चाहे वो लंग रिलेटेड है, लिवर रिलेटेड है, CRF है, इसमें देखिए डिप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एज अ क्लिनिशियन वी ऑल नीड टू सी एंड इवेलुएट दिस पार्ट एंड ऑल्सो एड्रेस इट. बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो मेजॉरिटी जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, दैट इज टू स्टॉप द इवेलुएशन. जो डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स हैं आपके और जो इस बीमारी में इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत कम है और सिर्फ IPF के लिए है. आपकी प्रोग्नोसिस क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करेंगी, आपको ये भी थोड़ा सा आपको इसका होना चाहिए. You say our time is end or we have 5 more minutes to go? Ma'am, you can take 5 more minutes. Okay, because it's a long presentation, but I guess I just end with the basic treatment options. So this is an important slide. This is a poor prognostic marker of DPLD I would like to show. लेकिन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी कहा कि पेशेंट्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे प्रोग्नोसिस क्या है, और पेशेंट ये ज़रूर पूछते भी हैं हमसे. तो जब इनिशियल प्रेजेंटेशन होगी तो हिस्ट्री में भी देखेंगे उसकी, अगर उसके प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, अगर एज मोर देन 65 है ऑन द इनिशिएशन ऑफ डिजीज, या UIP जो हम IPF की बात कर रहे हैं वो है, या फिर आपका DLCO लेस देन 35 है और पेशेंट डीसैचुरेट कर रहा है 6 मिनट वॉक टेस्ट पे, या उसका फंक्शनल क्लास पुअर है. आई होप यू ऑल नो व्हाट इज नेहा. दैट्स योर मोबिलिटी स्कोर. योर फंक्शनल क्लास मीन्स हाउ मोबाइल यू आर एट होम. और आपका हाइपोक्सीमिया है. तो ये सब चीज़ें वो हैं जो कि अगर कोई पेशेंट DPLD के साथ आता है और इनके पास इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो इट मीन्स the long-term prognosis of this patient is not good. So there are always tools that tell us that which patient is going to respond well or not. लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करते, we treat all of them, but in our mind and when we are communicating with the family, this is very important to tell them that what we are suspecting and how hopeful we are. ठीक है. So every patient is different. We need to balance between the benefits and risk. कोई भी treatment for steroids हैं, and you guys till now understand there are like hundreds of side effects of steroids, and most importantly is the osteoporosis and then pathological fractures. So if the patient is already 65 or 70 post-mono female, and the patient is hardly is overweight, is obese, and she has other risk factor osteoporosis, they need to discuss with the family that if they want to go ahead with the steroids or not. These are important decisions during the IPF or DPLD treatment that we need to see. अगर आपको देना भी हमें देना भी पड़ रहा है तो हम फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, साथ हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए थ्राइस और ट्वाइस वीकली एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं. पेशेंट को काउंसिल कर रहे होते हैं कि आपकी जो घर पे कारपेट्स हैं, रग्स हैं, द फॉल असेसमेंट घर की जो बाकी साथ नहीं हो पाती, लेकिन हम एटलीस्ट पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि वो चीज़ें जो उन्होंने देखनी है. ओके. सो लेकिन अगर स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव डिसीज और NSIP आ गया है पेशेंट को, तो हमें स्टीरॉयड देने पड़ेंगे पेशेंट को सभी बताकर. तो आई वुड लाइक टू से एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन देयर आर फ्यू थिंग्स इफ यू कैन टेक होम फ्रॉम माय लेक्चर. इज नंबर 1 कि DPLD में पैरेंकाइमा क्या है, जो हमने डिस्कस करने की कोशिश की. There are different and heterogeneous group of diseases that come under this heading. So not only diagnosis, identify the patient as ILD, but identification, what kind of ILD is very important in treating the patient. Every patient is different, so we cannot give all of them steroids and disease modifying agents. We need to categorize them. Uh, uh, um, categorize them according to their